Now let us see what is nuclear binding energy. The sum of the masses of neutron and proton forming a nucleus is more than that of the actual mass of the nucleus. This difference of mass is called mass defect. What is mass defect? And it is denoted by del M. If a certain number of neutrons and protons are brought together to form nucleus, a certain charge and mass energy EB will be released. This is your binding energy, and EB is called binding energy. Here binding energy of this is the nucleus. ये nucleus का क्या हो गया? Binding energy. The binding energy of nucleus may be defined as the energy equivalent to the mass defect of the nucleus. If we separate the nucleus into its nucleons, we would have to apply total energy EB to those particles of Einstein equation, and Einstein equation is here mc square, that means del m c square, and del m is here what? Mass defect. So you can write, this is the formula here. Capital M is the mass of nucleus, small mp, mp क्या है यहाँ पर? This mp is the mass of proton. What is mn? mn is the mass of neutron, and capital M is the mass of nucleus, and del mc square is the external energy required to break the nucleus into protons and neutrons, and this particular energy is called binding energy. The binding energy of nucleus is defined as the minimum energy required to separate its nucleus and place them at rest and infinite distance apart. Let us see one numerical. A given coin has a mass of 3 gram. Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutron and proton from each other. Given information is coin is made of copper 6329 and mass is 62.92960 unit. Here first you have to write the given information, and here given information is your mass of coin. Mass of coin is 3 gram. It is given. And atomic mass of copper. Second information, atomic mass of copper. Atomic mass of copper is 63 here. This is 63. And third, you know Avogadro number. Avogadro number (6.023 into 10 to the power 23). 6.023 into 10 to the power 23. कई बुक में इसको 6.022 भी लिखते हैं. This is Avogadro number. Mass of proton MP, ये आपको दिया रहेगा, इसको लर्न करने का जरूरत नहीं है. जब भी इंस्ट्रक्शन रहता है तो आपको दिया रहता है. यहाँ मैं लिख देता हूँ. Mass of proton is here 1.007825 unit. This is mass of proton. इसको हम लोग M कैपिटल लिखते हैं. This is और P को साइड में लिखते हैं. This is 1.007825 unit. Mass of neutron Mn is equal to mass of proton, and this is mass of neutron 1.008665. 1.008665 unit. This is the mass of neutron. Slightly थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये mass of neutron और mass of proton है ये. Now, what is the energy required to separate the neutron or proton? And that energy is EB. EB is energy required to separate proton and neutron. Separate proton and
neutron, and this energy is called binding energy. Now you can use the concept of mass defect. This is here, and mass of neutron is given. EB is the energy required to separate proton and neutron. जो न्यूक्लियस में आपके पार्टिकल हैं, that particle is proton and neutron. उसी न्यूक्लियस को हमको ब्रेक करना है, and that energy is called EB, and EB is here binding energy. और हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है EB इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर. आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्वेशन को हम यहाँ यूज करेंगे, और डेल एम इज मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है, डेल एम इज इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम. जेड इज हियर 29, 63, और ये 29 आपके पास इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, तो ये आपके पास 29 है. एंड हियर एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन देखिए यहाँ पे 1.007825, एंड ए इज हियर 63 एंड जेड इज हियर 29. तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों को माइनस करेंगे तो यू विल गेट दिस वन, एंड दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन. मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको इंफॉर्मेशन ये दिया रहेगा बुक के इंस्ट्रक्शन में, या फिर बुकलेट जो आप एग्जाम देंगे उसमें आपको दिया रहेगा, ये गिवन इंफॉर्मेशन है. इनटू 1.008685 ये मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन है. यहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की यू हैव टू डू द कैलकुलेशन केयरफुली. और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और कई बार जेई मेंस या नीट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे. तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा सावधानी से करना है, और इस पे ध्यान रखेंगे कि कौन सा वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे. क्वेश्चन टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बट दिस इज केयरफुल कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर. तो दिस इज हियर दिस वन, एंड आफ्टर सब्सट्रैक्शन यू विल गेट, इसको माइनस करने के बाद you will get the value this one. This is here del m. Now number of atoms in 3 gram of coin. 3 gram of coin, this is Avogadro number into 3, and this is 63. This is 63 A, and divide करने के बाद ये आपके पास आ गया है. तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये टोटल मास डिफेक्ट हो गया. ये मास डिफेक्ट इसको हम 3 ग्राम के लिए अप्लाई कर दिए, तो you will get this is the total mass defect, and बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर. तो सी स्क्वायर 1 यूनिट 1 एटॉमिक मास यूनिट पे जो आपका एनर्जी रिलीज होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उसी को हम यहाँ इनटू कर दिए, तो यू विल गेट 1.699697 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 931. तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट the neutron and proton. देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई विथ लेस टोटल बाइंडिंग एनर्जी टू न्यूक्लियाई विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी. There are two ways to obtaining energy from nucleus are following. First one is nuclear fission. That is nuclear, this is nuclear fission, and second one is nuclear fusion. Let us discuss here nuclear fission. Nuclear fission is a phenomenon of splitting a heavy nuclei whose A is greater than 230 approximately into two or more lighter nuclei by the bombardment of proton, neutron or alpha particle. bombardment का मतलब है उस पार्टिकल से उसके न्यूक्लियस को हिट करना. अगर उसको हिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के इक्वेशन आपको दिखाई देंगे. This is unstable nuclei 235 and this is 92. If you are hitting this by neutron, तो न्यूट्रॉन के लिए हम लिखेंगे 10, और इसको हिट करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर this is BA and this is 141 and this is 56 and
this is scrap term Kr, this is 92 and this is 36 plus यहाँ पे लिखेंगे प्लस दिस इज 3 and N10. That means in one reaction you will get 3 extra neutron plus Q. Q is the energy released. This is energy release. तो याद रखेंगे कि दिस इज योर न्यूक्लियर रिएक्शन. तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो केमिकल रिएक्शन से कई टाइम्स ज्यादा रिलीज होता है. Here Q value refer to the energy released in nucleus process, and here Q can be determined with the Einstein mass energy relation. E is equals to mc square. Here m is mass defect. m क्या है? mass defect है. And Q value is equal to the difference of product and reactant multiplied by the square velocity of light. बस ये रिएक्शन जो है कंटिन्यूअस होते चला जाएगा. और देखिए एक न्यूट्रॉन के हिट करने से यू विल गेट 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन. तो ये क्या करेगा फर्दर कुछ इस तरह से ये हिट किया तो 3 न्यूट्रॉन आपके पास आया. फिर से ये 3 न्यूट्रॉन जो है वो अलग अलग रिएक्शन देगा. तो दैट मीन्स यू विल गेट दिस टाइप ऑफ फिर से एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन. फिर से यहाँ पे देखिए 3 न्यूट्रॉन, अगेन 3 न्यूट्रॉन, again this is it converts into 3 neutron, or neutron is responsible to proceed the nuclear fission reaction. यही रिस्पॉन्सिबल है आगे के न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए. और ये जो प्रोडक्ट आपको मिलते जा रहा है दिस प्रोडक्ट इज अनस्टेबल. तो ये रिएक्शन तब तक होता चलाएगा जब तक कि आपको कोई स्टेबल न्यूक्लियाई न मिल जाए एंड न्यूट्रॉन जब तक कि रुक ना जाए. तो न्यूट्रॉन अगर कंट्रोल्ड नहीं है दैट मीन्स इन एवरी स्टेज दिस इज प्रोड्यूसिंग लाइक दिस, इस तरह से चेन की तरह हो रहा है. तो यू विल गेट दिस इज अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियर चेन reaction. There are 2 types of nuclear chain reaction. First one is controlled. And second one is uncontrolled. तो देखिए कंट्रोल्ड में क्या होगा. इन कंट्रोल्ड हर स्टेप एवरी स्टेप में हम क्या करेंगे 2 न्यूट्रॉन को हम रोक देंगे. इनिशियली भी अगर 2 न्यूट्रॉन को हम रोकते तो ये हमारा रिएक्शन होता है, ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है. फिर से 2 न्यूट्रॉन को हम रोकेंगे यहाँ पर. तो 2 न्यूट्रॉन को हम रोकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद 1 न्यूट्रॉन को हम आगे रखते हैं ताकि रिएक्शन जो है कंटिन्यू होता चला जाए. बट इन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन इन एवरी स्टेज कुछ इस तरह से ये प्रोसीड करेगा. 3 न्यूट्रॉन, अगेन 3 न्यूट्रॉन. तो सोचिए कि कितना मल्टीप्लाइड होते चला जाएगा एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन. और न्यूट्रॉन को हम इसमें रोक नहीं पाते हैं. इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन there is a release of extra neutron. The extra neutrons in turn initiate fission process, proceeding still more neutron and so on. Thus, the chain of nuclear fission is set up called nuclear chain reaction, and there are 2 types of nuclear chain reaction. First one is controlled and second one is uncontrolled. If by means of reaction is controlled in such a way that only 1 neutron is emitted in the fission causes another fission, then the fission rate remains constant. In this case, fission rate remains constant. That means it is controlled reaction. The fragment nuclei produced in the fission are highly unstable and they are highly radioactive and emits beta particle in succession until reaches the स्टेबल इन प्रोडक्ट. तो आपके पास ये रिएक्शन जो है कंटिन्यूअस होते चला जाएगा. और देखिए एक न्यूट्रॉन के हिट करने से यू विल गेट 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन. तो ये क्या करेगा फर्दर कुछ इस तरह से ये हिट किया तो 3 न्यूट्रॉन आपके पास आया. फिर से ये 3 न्यूट्रॉन जो है
वो अलग अलग रिएक्शन देगा, तो दैट मीन्स यू विल गेट दिस टाइप ऑफ, फिर से एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन, फिर से यहाँ पे देखिए 3 न्यूट्रॉन, अगेन 3 न्यूट्रॉन, अगेन दिस इज, it converts into 3 neutron, or neutron is responsible to proceed the nuclear fission reaction. यही रिस्पॉन्सिबल है आगे के न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, और ये जो प्रोडक्ट आपको मिलते जा रहा है, दिस प्रोडक्ट इज अनस्टेबल। तो ये रिएक्शन तब तक होता चलाएगा जब तक कि आपको कोई स्टेबल न्यूक्लियाइड न मिल जाए, एंड न्यूट्रॉन जब तक कि रुक ना जाए। तो न्यूट्रॉन अगर कंट्रोल्ड नहीं है, दैट मीन्स इन एवरी स्टेज दिस इज प्रोड्यूसिंग लाइक दिस, इस तरह से चेन की तरह हो रहा है, तो यू विल गेट दिस इज अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियर चेन reaction. There are two types of nuclear chain reaction. First one is controlled. And second one is uncontrolled. तो देखिए कंट्रोल्ड में क्या होगा, इन कंट्रोल्ड हर स्टेप, एवरी स्टेप में हम क्या करेंगे, दो न्यूट्रॉन को हम रोक देंगे, इनिशियली भी अगर दो न्यूट्रॉन को हम रोकते तो ये हमारा रिएक्शन होता है, ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। फिर से दो न्यूट्रॉन को हम रोकेंगे यहाँ पर, तो दो न्यूट्रॉन को हम रोकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद एक न्यूट्रॉन को हम आगे रखते हैं ताकि रिएक्शन जो है कंटिन्यू होता चला जाए। बट इन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, इन एवरी स्टेज कुछ इस तरह से ये प्रोसीड करेगा, 3 न्यूट्रॉन, अगेन 3 न्यूट्रॉन, तो सोचिए कि कितना मल्टीप्लाइड होते चला जाएगा, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, और न्यूट्रॉन को हम इसमें रोक नहीं पाते हैं। In nuclear fission reaction, there is a release of extra neutron. The extra neutrons in turn initiate fission process, proceeding still more neutron and so on. Thus, the chain of nuclear fission is set up called nuclear chain reaction, and there are two types of nuclear chain reaction. First one is controlled and second one is uncontrolled. If by means of reaction is controlled in such a way that only one neutron is emitted in the fission causes another fission, then the fission rate remains constant. In this case, fission rate remains constant, that means it is controlled reaction. MF, this is multiplication factor or reproduction factor, and this reproduction factor is equal to here K, and K is the rate of production of neutron divided by rate of loss of neutron. This ratio is called K, multiplication factor or reproduction factor. इसी को हम RF reproduction factor भी बोल सकते हैं. If K is equal to 1, then operation of reactor is critical. If K is greater than 1, then reaction rate and the reactor power increases exponentially. Exponentially means like this. इस तरह से ये इंक्रीज करेगा. And if K is less than 1, then reaction gradually stops, and this situation is called subcritical. Here K greater than 1, this situation is called supercritical. ये आपके पास supercritical situation है. This graph is for supercritical situation. This is the rough schematic diagram of nuclear reactor. In every nuclear reactor, this type of nuclear reaction happens, and this is nuclear reaction. एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, उसके बाद दो प्रोडक्ट के साथ अगेन यू आर गेटिंग 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन with huge amount of energy, and this 3 extra neutron is responsible for further reaction. Here this is the diagram. This is control rod. इस ब्लैक से जो किया गया, this is control rod. This is actually made of cadmium rods. Its work is to absorb the neutron. Extra neutron को क्या करता है, ये आपको absorb कर लेता है, और एक न्यूट्रॉन को बस प्रोसीड होने देगा ताकि कंटिन्यूअस रह सके, ताकि इसका कंटिन्यूटी रिएक्शन का बना रह सके. दिस इज योर फ्यूल रॉड. यही यूरेनियम 235 है जो ये शेडेड किया हुआ है. दिस वन इज योर फ्यूल रॉड.
दिस इज शील्डिंग, ये शील्डिंग किया गया है ताकि कोई लीकेज ना हो। एंड दिस इज कूलेंट, ये वाटर है, यहाँ पर पंप है, इस पंप से फिर से पानी यहाँ से जाएगा और ये सुपर हीटेड स्टीम है, और स्टीम से ये क्या होगा, एक्सट्रीम प्रेशर से यहाँ पर ये टरबाइन मूव करेगा एंड यू विल गेट, दिस इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये स्टीम टरबाइन, हीट एक्सचेंजर है, ये वाटर कंडेंसर। कोल्ड वाटर फिर से ठंडा होकर यहाँ बढ़ेगा, फिर से ये गर्म होकर इस जो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होगा, दिस हीट इज हियर यूज्ड to heat the water to, and here you will get the extreme superheated steam, और जो वाटर गर्म होने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम से प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर से ये आपका फ्लिप मूव करेगा। इस ह्यूज प्रेशर को हम यूज करके इस टरबाइन के फ्लिप को मूव कराते हैं, और टरबाइन के इस फ्लिप को मूव करने के बाद ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एंड ईएमएफ से हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद से जब ये स्टीम यूज हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करके फिर से कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो गया, कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होने के बाद फिर से हीट करते हैं, और इस पंप के थ्रू हम इसको पानी को नीचे से ऊपर कंटिन्यूअसली भेजते हैं। देयर आर सम कंपोनेंट्स, की कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर विच आर योर न्यूक्लियर फ्यूल, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, plutonium 239, etc. That means you can say it is a material that can be burned by nuclear fission or fusion to devise to produce nuclear energy, and the common fuel is uranium 235. Nuclear reactor core. Nuclear reactor core, it is the portion of nuclear reactor containing the nuclear fuel components where the nuclear reaction takes place. जहाँ पर nuclear reaction हो रहा है उसको हम लोग nuclear reactor core कहते हैं। नेक्स्ट मॉडरेटर, यहाँ पर मॉडरेटर देखिए किसको बोलेंगे, दिस इज हियर मॉडरेटर, दिस इज मॉडरेटर। इट इज द मीडियम टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फिजन, एंड हेवी वाटर graphite, deuterium, paraffin, etc. acts as a moderator. Now control rods. Control rods क्या हो गया, it is used in nuclear reactor to control the rate of fission and uranium and plutonium. They are made of chemical elements capable of absorbing many neutrons without fission themselves, such as silver, indium, boron और cadmium. बोरोन भी यूज कर सकते हैं, कैडमियम भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट योर कूलेंट, तो ये आपके पास यहाँ पर कूलेंट है, कूलेंट को यूज करके हम इसको ठंडा रख रहे हैं। इट इज द लिक्विड टू यूज टू रिमूव द हीट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर कोर एंड ट्रांसफर इट to electrical generator and environment. Ordinary water under high pressure is used as your coolant. Shielding, it is the protective covering made of concrete wall to protect from harmful radiation. इससे हम लोग क्या करते हैं, ये शील्डिंग हो गया, ये जो शील्डिंग है, और इससे हम लोग जो कोई लीकेज ना हो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई और कवरिंग मटेरियल होता है, कंक्रीट वॉल को यूज करके हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Next, nuclear fusion reaction. Here, what is fusion? And fuse means combine. Here, nuclear fission is the phenomenon of fusing two or more lighter nuclei. Lighter nuclei देखिए, हाइड्रोजन इज लाइटर nuclei. पीरियोडिक टेबल में ये आपके लेफ्ट साइड एक्सट्रीम टॉप पोजीशन पे है, तो दिस इज वेरी लाइटर nuclei. Nuclear fission, this is the process of fusing two or more lighter nuclei forming single heavy nucleus. For fusion to take place, the two nuclei must come close enough so that attractive short range nuclear force able to affect them. Since the both nuclei and positive charge particles here, the Coulomb's repulsion, therefore they must have enough energy to overcome. And here
fusion of hydrogen nuclei into helium nuclei is the source of energy of most of the stars including sun. सन पे भी जो रिएक्शन हो रहा है उसमें 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है कंबाइन होकर आपको अल्टीमेटली हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग. तो जितने भी स्टार या फिर सन देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर यही रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है. Students, rest of the lecture will be in next video. Keep watching. Thank you.